Yeah, the rivers coming from the northern mountains are involved. The rivers coming in northern mountains are involved in depositional work in the lower coast. Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine islands. तभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है, एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट के वजह से. जो तो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न माउंटेन्स, वहां पे डिपोजिशनल अरे ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे क्या है बच्चा, डिपोजिशनल वर्क पूरा ज्यादा है. ओके, पर जब आप नीचे नीचे आते जाते हो तो डिपोजिशनल वर्क क्यों ज्यादा है नॉर्दर्न पार्ट में, बिकॉज वहां पे रिवर का फ्लो ज्यादा है. तो रिवर का फ्लो ज्यादा है, इसके लिए डिपोजिशन ज्यादा है. बट व्हेन यू कम टुवर्ड्स द लोअर पार्ट, जेंटल स्लोप है वहां पे. लोअर पार्ट में क्या है, एकदम जेंटल स्लोप है, बिकॉज ऑफ विच वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नॉट दैट मच. ठीक है, तो रिवर का वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, तो डिपोजिशन होने का भी चांसेस इतना ज्यादा नहीं है. And इसके लिए लोअर पार्ट में यू सी formation of river islands. Clear? Clear, both of you? Yes. Yeah. The river in the lower courses split into numerous channels due to the deposition of silt, and these channels are therefore known as distributors. ठीक है, कि जो फिर लोअर लाइन में जो सारे रिवर्स है वो क्या हो जाते हैं, उसमें डिपोजिशन ऑफ सिल्ट होता है, सिल्ट का डिपोजिशन होता है, और वो सारे चैनल्स को क्या नाम दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटरीज. The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as Punjab plain, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, which is Jhelum, Chenab, Ravi, and Beas, and Satluj, originate from Himalayas. This section of plain is dominated by the dobes. ठीक है, तो dobe क्या है? It is made up of two words, do and up. So do meaning two and up is water. Okay, so similarly Punjab is also made by two words, which is punch meaning five and up meaning water. The northern place three sections में divided है बच्चा लोग. So what are those three sections? Those three sections are so those three sections are Punjab plains, which is formed Punjab plains formed by Indus and its tributaries. ये सारा ठीक है. एंड यहाँ पे अगेन इफ यू सी Indus के tributaries आपको यहाँ पे बताया. Even this can be a one line question, that what are the tributaries of Indus. So you have Jhelum, you have Chenab, Ravi, Beas and Satluj. ये सारे क्या है, ये tributaries है Indus rivers के. Next, the Ganga plain extended between Ghagar and Teesta river. तो गंगा कहाँ पे extend होती है, जो तीस्ता river है, और जो घाघर part है वहां पे गंगा extend होती है. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal towards east, particularly in Assam lies in ब्रह्मपुत्रा प्लेन. तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन बताया कि गंगा कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होती है, कि कौन कौन से स्टेट में से फ्लो होती है. तो यू हैव नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये सारे प्लेसेस से क्या होती है, गंगा रिवर फ्लो होती है. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, the northern plain can be divided into four ranges. ठीक है, कि नॉर्दर्न प्लेन को हमेशा से ऐसे फ्लैट लैंड माना गया है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई रिलीफ नहीं है या उसमें कोई वेरिएशन नहीं है. बट ऐसा नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ रिलीफ, और ये रिलीफ भी आप फोर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो. डिवाइडेड है. So the rivers after descending from the mountains deposit
pebbles in a narrow belt of 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of Shivalik, and it is known as Bhabar. तो मैंने जैसे आपको बोला, जब रिवर फ्लो होके आती है तो जब वो नीचे आती है ना तो वहां पे पेबल्स, स्टोन, सॉइल वो सब डिपॉजिट करती है. तो यहाँ पे भी स्टोन्स, वो जहाँ 8 to 16 विद में एक स्लोप है वहां पे वो ये करते हैं, डिपॉजिट करती है, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज भाबर. ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज भाबर. सो यू कैन राइट द रिवर्स व्हेन दे डिसेंड they deposit pebbles in a narrow belt. That belt is about 8 to 16 kilometer in width, which is parallel to Shivalik plains, and that particular plain is known as Bhabar. Getting it? Both of you? Yes, ma'am. Yeah. Yes. All the yeah, thank you. All the streams disappear in the Bhabar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as terai. ठीक है, तो ये बेल्ट के ही स्ट्रीम्स और रिवर्स जब री-इमर्ज होते हैं तो वापस एक वेट ये बनाते हैं, मार्शी रीजन, एकदम स्लिपरी रीजन बनाते हैं. दैट इज नोन एज terai. This was thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agriculture land and to settle migrants from Pakistan after partition. ठीक है, तो यहाँ पे thick forest हुआ करता था, but ये forest को clear कर दिया because we can practice agriculture over here. और again जो migrants आए हैं पाकिस्तान से उनको settle करने के लिए वहाँ पे. Locate Dudhwa National Park in this region. So again ये आपको work दिया है that you need to locate Dudhwa National Park. The largest part of the northern plain is formed of an older alluvium. It lies above the footplains of the river and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. ठीक है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है ना उसका जो मोस्ट लाइक पूरा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन हम लोग ने देखा कितना बड़ा है, उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है ना बच्चा, वो एकदम ओल्डर एल्यूमिनियम के डिपॉजिट से बना है. और वो कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज above the footplains of rivers and it is and presents a terrace like feature. ठीक है, तो वो rivers के footplains पे ये डेवलप हुआ है, and that is why you called it as भंगार. भंगर, भगार, वैसे आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो उसको. द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलरीज डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर. ठीक है, कंकर. तो जो सॉइल है ना वहां पे जो डिपॉजिट होती है उनको क्या बोलते हैं? कंकर. तो ये सारे लोकल नेम्स है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड एज खदार. ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स के जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट, फिर जो नया नया डिपॉजिट होते जाएगा फूड प्लेन्स पे, उसको बोलते हैं खदार. एंड बंगाल किसको बोलते थे हम लोग? कि जो ओल्डर एल्यूमिनियम के वजह से जो डिपॉजिट हुए हैं वहां पे उसने क्या टेरेस लाइक फीचर या एक प्लेन ये लैंड जैसा बना दे, तो दैट वाज नोन एज बंगर. बट यहाँ पे खदार क्या है? जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स होते हैं, दैट इज नोन एज खदार. They are renewed almost every year, and so they are very fertile, thus ideal for intensive agriculture. ठीक है, and उसको हर year ये लोग renew करते हैं, ये जो deposits आते हैं उसको, and that is why they are very fertile. ठीक है, and इसके लिए वो agriculture में भी काम आते हैं. Clear यहाँ तक? Yes, ma'am. Yeah. Now we will see the third feature, physical feature, which was Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau is table land composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. तो ये किन deposits या क्या है इसमें combination? So you have composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks.
It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने पहले देखा कि oldest landmass कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू। तो वो कैसे फॉर्म हुआ था, जो गोंडवाना लैंड है ना, उसके ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के वजह से ये पेनिनसुला प्लेटू फॉर्म हुआ था। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. So क्या क्या है ये plateau में? You have valleys, you have rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. ठीक है, तो इसमें दो divisions है, एक है Central Highland और एक है Deccan Plateau. A part of Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा दो हाईलैंड्स है, डिविजन्स है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड किसको बोला है? जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, जो मालवा प्लेटू का ऑलमोस्ट एरिया कवर करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है। The Vindhyan range is bounded by Satpura range on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. फिर इसका एक्सटेंशन बताया कि जो विंध्यान रेंज है वो सातपुरा रेंज के साथ साउथ में ये होता है, मिक्स होता है। एंड जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन के वेस्ट में कहाँ पे एक्सटेंड होता है, तो वो राजस्थान एरिया के साइड एक्सटेंड होता है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Kane, is from the southwest to the northeast, thus indicating a slope. ठीक है, तो यहाँ पे flow of river कैसा है? It is from southwest to northeast, and इसी से पता चलता है कि क्या है, एक slope form हो रहा है। The Central Highlands are wider in the west but narrower in the east. So ये Central Highland जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? It is wide in the west के side वो wider है, but when you come towards the east वो narrow होते जाता है। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड और बागेलखंड, और यही plateau का जो ईस्ट साइड एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बुंदेलखंड। नेक्स्ट, the Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. और east के side what you will find? You will find Chota Nagpur Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada. ठीक है, तो अभी हम लोग ने Central Highlands के बारे में पढ़ लिया, ये पूरा we have studied about Central Highlands. अब जो second broad division है Deccan Plateau, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो if you understand Peninsula Plateau में भी we are studying about its two division, which is Central Highland and Deccan Plateau. So now we will study about Deccan Plateau. It is a triangular landmass that lies to the south of river नर्मदा। ठीक है, कि ये साउथ के रिवर नर्मदा में फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे इफ यू सी सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे हो रहा था? इट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ it lies towards the river north of नर्मदा। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो याद करने के लिए। The Satpura range flags its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extension. Locate this hill and range in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. ठीक है, तो ये वेस्ट के साइड हाई है और ईस्ट के साइड जेंटल स्लोप है। और यहाँ पे कैसे था? यहाँ पे कैसे था? ये वेस्ट के साइड ये था, हम लोग ने देखा ना यहाँ पे के साउथ या यहाँ पे इंडिकेटिंग स्लोप के साउथ के साइड ब्रॉड होते जाता था। और नहीं नहीं ये वाला पार्ट नहीं, just मैम वो indicating, yeah यही पार्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट thus indicating a slope। और यहाँ पे क्या है कि ये वेस्ट के साइड हायर है और ईस्ट के साइड आते आते जेंटली स्लोप फॉर्म करता है वैसे। An extension of the plateau is also visible in the north east, के नॉर्थ ईस्ट के साइड भी थोड़ा एक्सटेंड होता है।
यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा ना वेस्ट और वेस्ट के साइड का ही बात करें, बट थोड़ा सा इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एज वेल, विच इज लोकली नोन एज मेघालय। और जो नॉर्थ ईस्ट के साइड एक्सटेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेघालय। Karbi Anglong Plateau and North Kachchar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi, and the Jangtan Hills. You were saying something, Pat? Okay. The Western Ghats and the Eastern Ghats marks the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lies parallel to the western coast. These are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच, ठीक है, वो कहाँ पे लाए होते हैं, तो वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। आगे हम लोग यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, तो अभी वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन क्या है, इट इज 900 to 1600 meters, wherein ईस्टर्न घाट्स का कितना एवरेज है, ये है एलिवेशन, इट इज ओनली 600 meters, and that is why they say that western ghats are higher as compared to eastern ghats. The eastern ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nigri Nigiris in the south. The eastern ghats are discontinuous and they are irregular and descended by rivers draining into the Bay of Bengal. तो कहाँ पे stretch होता है, महानदी वैली से निगरीज तक, और ये कहाँ पे discontinuous और irregular है, it is because of the rivers, okay, कि जो rivers Bay of Bengal की तरफ flow होती है उसके वजह से the eastern ghats they are irregular, एकदम regular नहीं है और continuous नहीं है. The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of Ghat. The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. तो एक ऐसे रेन कॉज करते हैं ओरोग्राफिक रेन. ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, पढ़ा होगा ना अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में. व्हाट डू यू मीन बाय ओरोग्राफिक रेन? जो मॉइस्ट के वजह से होता है, मॉइस्ट एयर जब होती है ना, दैट लीड्स टू ओरोग्राफिक रेन. नेक्स्ट, the highest peaks includes the Anai Mudi and the Doda Beta. Okay, तो कौन कौन से highest peaks है यहाँ पे, you have Anai Mudi and you have Doda Beta. Mahendragiri is the highest peak in the eastern Ghats. Chevroy Hills and the Jawadi Hills are located to the south of eastern Ghats. ठीक है, तो यहाँ पे highest peak, एक तो हम लोग ने ये देखा नाईमुड़ी एंड डोटा बेटा, बट महेंद्रगिरी भी एक है जो highest peak है वहां पे. और कौन कौन से hills है, so you have Chevroy Hills and you have Jawadi Hills जो eastern Ghats पे locate करते हैं. ये सारे आपके एक्टिविटीज है that you need to locate the famous hill stations of Udangamandalam, popularly which is known as Uti and Kodaikanal. One of the distinct features of Peninsula Plateau is the black soil area known as Deccan Trap. ठीक है, तो इसका one of the distinct features, एक अलग feature क्या है Peninsula Plateau का, कि यहाँ पे you have black soil area, ठीक है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं Deccan Trap. So what is Deccan Trap? It is one of the place of Peninsula Plateau where you can find black soil. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. तो कैसे हो गया? Because ये volcanic origin से है, तो rock यहाँ पे कैसे है? Igneous है, and ये rock over time denude होते हैं. Denude मतलब क्या? कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, and because of which it leads to the formation of black soil. The Aravalli Hills
Hills lies on the western and the northwest margins of Peninsula Plateau. तो अरावली हिल्स का भी पूछ सकते कभी कि कहाँ पे लाई होता है पेनिनसुला प्लेट्यू में, तो टुवर्ड्स द वेस्टर्न एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न margins. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in southwest northwest direction, southwest to northeast. तो अरावली हिल्स कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? गुजरात टू दिल्ली, तो गुजरात के साउथ वेस्ट में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट तक. क्लियर बच्चा लोग यहाँ तक? क्लियर? Yes, ma'am. Yeah. The Indian Desert. The Indian Desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall because below 150 mm per year. ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई करती है? ये अरावली हिल के वहाँ पे लाई करती है, जो आखा टाइम मोस्टली सैंड ड्यून से कवर होते हैं. ये रीजन में कैसा है? वेरी लो रेनफॉल, almost 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sun. Luni is the only river in this region. The Indian desert में सिर्फ एक ही river है, which is Luni river. Clear? Chalo. Barchans, which are crescent shaped dunes, they cover large areas but longitudinal dunes because more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. Next, अभी हम fourth वाला देखेंगे, which is coastal plains. The Peninsula Plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. ये तो हम लोग ने देखा Peninsula Plateau के बारे में. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is known as narrow plain. तो जो western coast आता है किसके बीच में रहता है? Western Ghats के बीच में and Arabian Sea के बीच में. तो जो वो फॉर्म होता है that is known as narrow plain. तो उसमें क्या क्या है? It consists of 3 sections. So which are those 3 sections? Parth, which are those 3 sections? We have Konkan, which is Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kannada plain, while the southernmost stretch is referred to as Malabar coast. So ये northern part, यही northern part में you have Konkan, you have Kannada plain, and you have Malabar coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as Northern Sirkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. तो ये plains का क्या है? ये कहाँ पे wide है? Bay of Bengal के तरफ. And if you come towards this northern plain, they are also known as Northern Sirkar. तो ये अलग अलग नाम जो दिए जाते हैं, और जो south part है उसको क्या नाम दिया है? Coromandel coast. Large rivers such as Mahanandi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. ठीक है, तो यहाँ पे किन किन rivers का delta है? You have Mahanadi, you have Godavari, Krishna, and Kaveri, and you can also find Lake Chilika over here. So now we will come to the last part, which is the island, the 5th physiography of India. तो islands कौन-कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has 2 groups of island. Can you identify these groups of island? Next, locate the Lakshadweep. Yeah.
Locate the Lakshadweep island groups lying closer to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. ठीक है, तो अभी जो लक्षद्वीप आइलैंड हम लोग ने लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ा था, लक्षद्वीप और कौन सा आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में क्या कहा गया है, दिस ग्रुप लाइज क्लोज टू द मलबार कोस्ट ऑफ Kerala. This group is composed of small coral islands. के यहाँ पे you can find small islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973 these were named as Lakshadweep. तो पहले के इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. It covers small area of 32 square kilometer. कि उसका area कितना है? It is of 32 square kilometer. This island group has great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. The bird sanctuary भी एक है यहाँ पे, and this island is great. It has a great diversity of flora and fauna. Clear इतना part? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Now you see the elongated chains of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands, जो हम लोग ने last time पढ़ा था. That Bay of Bengal एक side पढ़ा, Lakshadweep Island पढ़ा, and Andaman Nicobar Island बताया. So now we are going to study about Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories, which is the Andaman in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These island groups are of great strategic importance for the country. ठीक है कि ये जो island groups है ये important है, क्यों देखते हैं. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. के यहाँ पे भी you have great diversity of flora and fauna. और ये कहाँ पे lie करते हैं, तो it lies close to the equator and therefore it experience equatorial climate and it has thick forest covers. Clear? Both of you? Yes, ma'am. Yeah. A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. के हर एक जो हमारा physical feature है ना, वो एक दूसरे को क्या करता है, complement करता है, and therefore हमारी एक ऐसी country है जो हर सारे natural resources में क्या है, it is richer. That आप कोई भी physiography बोलो, river bolo, island bolo, mountains bolo, you can find everything in India. The mountains are the major source of water and forest wealth. के mountain से हमें क्या मतलब main एक मिलता है, we get water and forest wealth. जो northern plains है वो they are the granaries of country. के हमारे country के क्या है, they are granaries. They provide the base for civilizations. के जहाँ पे हम लोग ने देखा northern plain में we have a lot of agriculture thing going on. So that is why they provide the base for civilization as well as they are known as granaries of our country. फिर जो plateau है, plateau क्या है, it is a storehouse of minerals. के जो भी आप minerals बोलो, which has played a crucial role in the industrialization of country. तो ये सारे जो minerals है वो आप कहाँ पे find कर सकते हो, you can find it in plateau. The coastal region and island groups provide sites for fishing and पोर्ट एक्टिविटीज. ठीक है, कि जो फिशिंग करने के लिए, पोर्ट एक्टिविटीज करने के लिए कौन सा रीजन काम आता है, जहाँ पे आइलैंड्स है या जहाँ पे कोस्टल रीजन है. एंड थस यू कैन से दैट डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट. के ये सारे जो फिजिकल फीचर्स है ना, ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम आ सकते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yeah.